ठीक है। Le matin, Sylvie s'élève à 6 heures ou 6 heures et demie. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. तभी ये नहीं, Ensuite, एल्सा भी। elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle lit un peu et elle écoute अब la radio un peu et elle écoute la radio. Après son petit déjeuner, elle s'occupe ओके। de ses, s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents. Elle se maquille. Elle met son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7h15. ओके। Le matin, the morning. Sylvie se lève à 6 heures ou 6 heures et demie. What is the meaning of that? 6:30. 6 or हाँ, 6:30. she wakes up at 6 or 6:30. Say assez tôt pour elle. It's really early for her. Okay. Elle prend sa douche. She takes the shower. Et elle s'habille. And she dresses up. Ensuite, then, elle prend son petit déjeuner. Meaning, She takes her breakfast. Right. हाँ, petit déjeuner. Elle prend son petit déjeuner. She takes her breakfast. हाँ, मैम यू सेड ना पति दिजुने ब्रेकफास्ट, हाँ जी, हाँ जी, दिजुने लंच और डिनर डिनर। हाँ जी। Prend son petit déjeuner. Elle lit un pas. Pendant, during the petit ड्यूरिंग déjeuner, elle lit un pas et elle écoute la radio. She listens to the radio. Après और son petit लिट मीनिंग मैम थोड़ा सा मतलब शी the लाई verb डाउन और is समथिंग। reads. She reads. reads. The verb is leer. अच्छा L-I-R-E. अच्छा It is an अच्छा irregular verb which ओके। means to read. She reads लिटिल a एंड little, un peu, a little. Et elle écoute la radio and she listens to the radio. Après, after son petit déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. S'occupe matlab she gets busy or basically she takes care of the green plants. Ensuite, then elle se prépare pour partir au travail. She prepares to go to work. Elle se brosse les dents. She brushes her teeth. Elle se maquille. She does makeup. Elle met son manteau. She put on her शी पुट manteau. हर कोट। Manteau, coat. Et elle part au travail and she leaves for work. Elle part de chez elle à 7h15. She leaves for work, like for chez elle मतलब for her place, अपने घर वापसी के लिए. She leaves at 7 or 7h15. Okay, Ankita, continue. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien, son collègue. Elle travaille de 8 heures à midi. Après son travail, elle va se promener dans un parc. Elle se promène pendant Dans une un heure parc. dans un parc. Elle se promène pendant une LA नहीं है अंकिता, you are saying LA. Elle, 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 elle se promenait pendant une heure et puis elle rentre. Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché, Course. courses au supermarché. De quoi? Supermarché.
supermarché du coin. Elle parlait quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas. Okay. So, avant de commencer son travail. That means Before to starting her work. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien. She takes a coffee with Julien. Elle travaille de 8h à midi. She works from 8 o'clock in the morning to midi. Midi is afternoon. Après son travail, elle va se promener dans un parc. Après son travail, after her work, she goes to walk in a park. Elle se promène pendant une heure et puis elle rentre. She walks for around like during 1 hour and then she returns. Chaque soir, every evening, elle fait quelques courses au supermarché du coin. Elle parle quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas. Anyone who can translate this last sentence for me? Every evening. She do some courses का मतलब नहीं समझ आया. To supermarket, local supermarket, and she speaks some minutes with her neighbor, and she return for like prepare the food. क्या हुआ मैं? ये कोर्स का मतलब कोर्स शॉपिंग का मुझे भी नहीं. हाँ. शॉपिंग ओके शॉपिंग ओके. Shopping. इट्स लाइक कोर्स मतलब फ्रेंच कोर्स so we have to remember. Yeah, no, it's not French course. French course is like नहीं मतलब फ्रेंच और स्पेनिश जो भी है इट्स लाइक कोर्स इंग्लिश वही वर्ड कोर्स. I know वो थोड़ा होता है but course over here is shopping. Quelques courses घर के सामान के लिए she goes to the supermarket du coin. coin मतलब कॉर्नर की, जैसे घर के हमारे इंडिया में होता है ना, घर के साइड की दुकान पे जा रहे हैं, पास की दुकान, तो supermarché du coin. Elle parle quelques minutes, she talks a few minutes avec la voisine neighbors, et elle rentre, she returns pour préparer le repas. Okay. Next. Sylvie vit seule. Sylvie lives alone. Elle n'a pas d'animaux. She doesn't have animals. Elle est heureuse comme ça. She is happy just like that. Percy, you can read that. Why am I reading? Okay. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Le soir, elle mange et regarde son programme préféré à la télé. Ensuite, elle fait la vaisselle et elle téléphone à une amie. Puis, elle s'est démaquillée, elle s'est déshabillée et elle prend son bain. Elle est prend en chaque soir. Elle reste pendant une heure. Après le bain, elle se sèche longuement les cheveux et après elle se couche. Elle lit un peu avant de s'endormir et elle s'endort vers minuit.
इसको वेयर कैसे मिनवी प्रोनाउंस करते हैं प्राची? हाँ, वेयर मिनवी, ये सेंदोर, ये एस और वो वर्ब्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सेंदोरमीर, सौंदर्मीर सौंदर्मीर सौंदरमीर, हम्म सौंदरमीर, यस ओके। तो सौंदोर, तो लस ये लास्ट वाला हाँ बोलो बोलो लास्ट वाला सौंदोत होगा। एल सौंदोत, वेयर, हाँ जी एल सौंदर वेयर ओके, मिनवी वेयर, ओके। Le soir, in the evening, elle mange en regardant son programme. She eats while watching the preferred program in the television. Then, elle fait la vaisselle. She does the cooking, sorry, dishing. Vessel मतलब सारा बर्तन को साफ सफाई. And elle téléphone à une amie and she calls a friend. Puis, then elle se démaquille. Maquille मतलब to put on makeup. Démaquille मतलब to remove makeup. मेकअप रिमूव करना. Elle se déshabille et elle prend son bain. Very evident. She undresses herself and she goes for a bath. Elle en prend un chaque soir. She takes a bath. This is जो en है. Of course, you don't know this. This is a pronoun. You need not know this. You are in an A1 level, but I'll just tell you the meaning of it. She takes the bath every evening. Okay. Ellie rests pendant une heure. She stays in the bath basically for 1 hour. Okay. Après le bain, after the bath, elle se sèche. Sèche मतलब dry herself. Longuement les cheveux, properly the क्या बोलते हैं hairs also. Et après, and then elle se couche. She goes to bed. Elle lit un peu avant. She reads a little bit before endormir before going to sleep. Elle s'endort. She goes to sleep vers minuit. कुछ ही मिनट्स में शायद सूख जाती है. हाँ ठीक है. So इतने this काम is it. करेगी थक गई होगी ना, जब भी सो Now गई. ये है पॉडकास्ट फ्रॉम से फासील का जिन्होंने दिया है जहां से मैंने डाउनलोड करा है. नाउ आई वांट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 to you all to answer and send me the answers. ओके.